I have started my recording. Now, today's task is to understand the basic distillation process, and then we will see some tutorials, and then I will suggest you to work out on those tutorials. So let me share my screen. Just confirmation. Screen visible है. बाद screen नजर आ रही है? Anyone? Yes. Okay. So screen is I hope screen is visible. Now, I would like to first demonstrate a basic problem of distillation, and then we will discuss the different aspects of distillation. Let me check. Is there any message by someone? No. Okay. So here I would like to design a distillation column for benzene and toluene, and this is a very famous example in books when we teach distillation, then we usually took this example because benzene and toluene are widely apart from each other on the boiling point. So I am taking these two components, benzene and toluene. Okay. So and is for normal routine, Peng Robinson equation of state. Okay. So I have one feed stream. Let's say I have one feed stream who is at uh, some temperature, and it is in a bar, some bar pressure, and at some flow rate. And I says that benzene is 55 and toluene is 44. I said normalize it, and okay. So this is our composition. And my objective is to separate these benzene and toluenes in 98, 97% purity from both the sides. In these components, benzene is more volatile as compared to toluene. So in distillate, we expect a higher concentration of benzene, and in bottom, we expect a higher concentration of toluene. So this is a now converge stream. Now I am in, installing this distillation column. This is the I think most robust column of this whole HYSYS, and you will find several tutorials on distillation. Even in our course, I will share more tutorials from tomorrow, but I already shared 2 or 3 tutorials or workshops. Okay, as you have seen in absorption, we were 3 pages. Now here we have 5 pages. Information is being inserted for the in a, along with 5 pages. Now this is a usual diagram of distillation. This is a fractionating distillation column. We have normally one feed stream, but we may have optional other feed streams as well. When we install any operation, so their name by default names are there. Like currently, the name of the column is T100, but you can change the name. There are number of stages. By default, it is 10. You can change the number of stages. In these examples, we actually cannot calculate the number of stages in this way, but we have another operation which is shortcut distillation, and through which we can estimate the number of stages as well. Okay, so this is a number of numbering top to down approach or bottom to up approach means numbers of stages are started from top. If you have default selection is top down, 1, 2, 3, and nth plate is bottom most plate.
You can also change this arrangement, but there's no any big deal or no any impact of the on the calculations. Only you will see 1, 2, 3 from bottom to up. Anyway, now in a condenser, you will find three options. Means by default it is selected partial. Partial means the vapors which are coming out from the distillation are partially condensed. So some product is in a vapor form, and the partially condensed vapors are the portion of those partially condensed vapors is recycled back, which is called reflux, and then a portion is also taken as a liquid product. So we have two kinds of product in a distillate form. One is in a vapor form, another is a liquid form, and portion of the liquid is also recycled. So this is a partial. And if you select total, so you will see that a little bit change you will find. Vapors are totally condensed through the condenser, and then a portion of that condensed vapors is recycled, which is reflux, and remaining is taken as a distillate. Now, this distillate product is in a liquid form, and full reflux means condenser is condensing whatsoever amount is refluxed, and the remaining amount is in a vapor form. So this is a full reflux. So whatsoever amount of vapors is condensed is sent back in the distillation column as a reflux. So these are the three arrangements. Normally we have a total condenser system. We want a liquid separation because feed is in a liquid form. So we also want our products in a liquid form, but now separated in our higher volatile and low volatile substances. So at least we must have some distillate products. So I said distillate, dist and bottom product. So I say pot. Sometimes we only say it D and B. Okay, so two energy streams need to be defined. One is for condenser and one is for reboiler. So usually the most popular names of these energy streams are Cund Q and Reb Q, reboiler Q, and uh, uh, condenser Q. So when you completely define all the relevant things, you have to add our feed stream, which is one. So now you see that this page is completely defined in terms of streams, at least material streams and energy streams. You can go in next column, next page. Okay, here you have to select that what type of reboiler you may have. For example, once through circulation with baffles and circulation without baffles and circulation with baffles. And this upper selection or three selections are just telling that how this reboiler is there. Once through reboiler means liquid is going in a reboiler, and some portion of the reboiler or some portion of the liquid is in a cup is converted in a vapor form, which is sent back in the distillation column. And circulation without baffles, you have a circulation manner. You can see a diagram is self-explanatory, and that how a reboiler is done. So no matter you select what here is just a little bit modifications of the calculation. Otherwise, the things are almost uh, uh, similar. Here we are not changing any option, but you may have this option. Another thing is that reboiler type is a regular HYSYS reboiler, heater, heat exchanger. Sometimes we have to exchange the heat of or excess heat of reboiler with our incoming feed stream. So sometimes we do this heat exchanger. But here I'm not giving any other options. The default options are okay. Now, in the next page, this is the third page. In this, you have to define the condenser and reboiler pressure. So usually reboiler pressure is a little bit higher, and condenser pressure a little bit lower.
If at any stage your condenser pressure is become higher, then it will give some error. You can also define the pressure drop here. It is by default 0 0. You could have some values, but it's okay. If there is 0 0, then it will also calculate some estimates. Next, we have optional temperature. If you have some information about the temperature, then you provide here. Otherwise, because these are the optional, so next button is active. You can go without giving any information here. Okay, this is a final stage. Now here, few informations are need to be inserted. For example, here by default is a reflux ratio or a liquid rate in the form of molar or mass or volume. Now these two informations need to be inserted here. Now it is up to us that whether we are inserting these values or we want some other values. Like in this particular example, I do not need or I don't have any information about how much liquid rate is coming out, but instead I have information that are my request or my target is to separate the benzene and toluene in the distillate benzene is almost 98%, for example. So in that case, you do not need to provide liquid rate, but you need to change the specifications of calculations. Reflux ratio, okay, you may have reflux ratio 3.4, 4.4. You can put reflux ratio, but this information instead of this information, I would like to change the specifications so which actually suits my requirement. So anyway, I just click on done, and you will find that this is now a routine or regular distillation page or distillation property panel. You will see several tabs in this, and now if you close this and again come, then now you will not see those 5 pages, because once you have gone through those 5 pages and clicked done, now you have this predefined settings or your stated settings. Now you can change the number of stages, that the condenser pressure, the reboiler pressure, and some streams names, this and that. Most of the things are available as it is, like total condenser, partial condenser. Most of the things are available in these design tabs or connection tabs. Okay, now I'm going to before converging, I'm going to in a specifications, and you see the default column specifications are four: reflux ratio, reflux rate, bottom center rate, distillate rate. And in specification, and you can see that in a specification summary, you will see that this type whatsoever specifications are defined here in specification summary, you will see those specifications, and you will see some columns, very important columns, like one column is active and one column is current. Active means it's no matter how many specifications are selected here or shown here, the important ones are the useful or the specifications which whose values are being injected in the calculations are those whose active tick is there. Here in this particular example, reflux ratio and distillate rate are by default ticked as active. So you need to provide at least these two information. If you click on the run now, it will says because distillate rate is a set specified value, but you do not have any given any value, so it will ask that you must put some value. But we are not interested. Only we are interested with the reflex ratio, but we are not interested in these three specifications. So I need to delete these specifications: distillate rate, uh, delete, and delete. Now I have only one specification, but now I have to add another specification, because when you go in a specification, because I have deleted all the specifications, so it says degree of freedom is +1. It means
you need one more specifications for the convergence of the column. Otherwise, it will not converge. Now, number of equations and number of variables are not equal. So I am adding one specification. I am adding the specification of what you say column component fraction. Column component fraction. This is the third one. And eight, you can put some name, for example, benzene fraction, benzene, yeah, p benzene fraction, and please, so that I can recognize this is a specification which tells how much of benzene in distillation. So this is specification is not a stage specification, but it's a stream specification. So I click on stream. Which stream? We have two streams in the column outside. One is distillate and other is the bottom. So I pick distillate and basis. For example, mole fraction is okay. Component for which I am striving for. So I am saying it is a benzene, and how much percentage purity I am interested here. For example, I say 97.97. 97% benzene should be in a distillate. So I said okay. So now see when I inserted degree this specification, so degree of freedom is 0. Even you basically in a specification summary, you will notice that now these two are active. So if I click on run, it will say that because we have a low pressure of the feed, but a little bit higher pressure in the column, but it has converged in somehow. And if I want to show you that what is the composition of this distillate, you will notice that whatsoever we have given 97, so 97 percentage of benzene is coming out from the distillate. Even we have not restricted that how much benzene concentration in the bottom stream, so it goes up till 95%. But anyway, this is converged, so it is 2.5 because some pressure adjustment is there. Okay, now this is converge. You can go in a performance tab and you can see how much flow rate of feed is there in the feed. Total flow rate in the mass molar flow rate is this one, in which benzene is 55%, and distillate is apart from 8,536 kilogram moles, almost 4,069 40 3 4,694 moles are going in distillate and remaining are in going on bottom with this composition 97%. Even you can see you can create the plots. For example, if I say temperature versus uh, view graph, you will see that how temperature profile is being there along with all stages. You can say uh, you can develop another graph. Uh, you can say that okay, so you can say pressure. So this is a pressure history of a column. You can see the flows of both the components, vapor and liquid. So you will see along these stages, this is the situation. Most of the things are important, like composition. You will see that from bottom, you will this red is showing benzene. Benzene is because zero is means top. We have top to bottom approach.
in numbering. So 0 means top. So in top, we have a maximum benzene and minimum toluene. This composition is reversed in bottom stage or in a bottom products. Toluene is higher because it is a low volatile, and benzene is low. So this is how you converge the things. The whole story is hidden in this specifications. You have to understand how specifications work and how this is being generated. Okay, so if you have any question, then you can ask. Otherwise, I will move to the tutorial. In the condenser specification, sir, Yes. if if you go for total, that means everything has been condensed, right? Okay. Then you still say no, but the condenser just condenses everything, but still some part is going back to the column, right? Yes. So why is it total then? It should be partial, okay? No, condensers names are written in the form of how much amount of vapors are being condensed. So total means the vapor which are coming out from the column are totally condensed. You see no any vapor product in the distillate side. Partial, if I select partial, you will see now we have two lines. One is in a vapor stream as well. So vapors coming in the condenser are partially condensed, and the liquid which is coming out from the condenser is again segregated. A portion of the liquid is fed back to the column, and remaining is getting as a liquid product. So we have two kinds of product: vapor product and liquid product. Full reflux means the because fractionating distillation column has two flows from top to bottom. One flow is liquid flow, which has to come down from top to bottom. If we do not fed back this reflux, so it will become a flash distillation. No any work for these stages. This will become flash distillation. Why it is called fractionating distillation? Because in each stage we have a rectification and stripping of the species. हर एक स्टेज पर जो है ना वो सेपरेशन हो रही है when vapors are coming from any stage and they meet with the incoming liquid at incoming point, both are in an equilibrium. Some high volatile components is being shifted from liquid to the vapor. Some low volatile components are shifted from vapor to liquid. This happens in each stage, and you will have a rectification and stripping of the amount species transfer. So this amount is called reflux. Whatsoever you fed back in distillation column, reflux is known as the amount which is fed back in a liquid state to the column. So when we say full reflux, it means the vapors coming in the condensers are definitely condensed for making some reflux amount. That amount is totally sent back, and we got the product in the vapor form. So that's why their names are as it is. So, but in any case, you'll feed back to the column, right? Yes, without this sorry, uh, if you do not send back some amount, then this will not happen. This is a beauty of fractionating column. Okay, Okay. let me see what happened. Okay, it says now it says they have given by default uh, one specification. This is a distillate rate. I just delete it and click on run.
0 and specific summary. This is 4.9, 0.97. Okay. And is there any something missed? Each is okay. Reset and run. One or more is in the column flow sheet are not fully defined. Okay, benzene, stream draw. Okay, distillate. Okay, ये हमने अभी जो उसको क्लिक क्लिक किया. Okay. Now, I'm interested to give you something which is not very much feasible. For example, if I change the amount from 200 to 20, I have increased the amount in a huge way, and I reset and run. Okay, still it is in a converging form. If I say it is the composition is benzene is only 30% and 70% is toluene. Is it possible? Now see, the solving is continuous. And on the background, you are seeing that the iterations are now 4,000 and reaches 5,000 and reaches 6,000 and reaching 7,000. It will go up till 9,999 and then it says the column is not unconverged. Okay, why? What is the reason it is not converging now? Is there any idea? जी फहद खान, कोई idea मैंने क्या किया? What I have done to make this understanding for you people that I have instead of giving 55 and 40% toluene and benzene, I have decreased the feed stream composition in the benzene, which is now 30%. Now, what is happening? Why it is not converging? That there are so many reasons. There could be so many reasons, but one reason is that by default 10 stages, and our requirement is that with this reflux ratio, I want to get benzene 97%. So as per calculation, it says that this is not possible in 10 stages. There could be other reasons, but one reason is that because now feed is coming is very poor in the benzene itself, and you want the 97% purity from the top and in 10 stages. Maybe, for example, if I say 30, maybe if you increase the number of stages and reset and run, now it converges only 3 iterations. Now it's possible for when you increase the iterations, sorry, number of stages, then the similar work now converge. And if you see in the performance and a summary, now amount of distillate is very decreased because already 30% in this, it means very less amount of distillate is coming out. And but now our required purity is maintained 97%. Now let's see. I'm interested that what is the most minimum number of stages which are possible for this. Decrease up till 2 more and run again. Okay, 28 is also okay. And 26 and run again. 26 is okay. Let's say, is it possible with the 20 stages? Run again. It says okay. I says what I'm doing is called rigorous simulation. Uh, हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट ये करेंगे तो ये नहीं भी होगा, हो सकता है कि अभी भी 10 पर भी कन्वर्ज हो जाए, 18 तक भी ओके हो गया. ओके 16. ओके 16 इज ओके. 14. 14 is also okay. 12. No, 12 is not.
Okay, 12 is not okay. 13, 14 तक तो हो गया था. 13 number of stages. Why don't we let it decide by itself? Okay, that is the matter of third tutorial. That how much exact number of stages are required. ये हम Hmm. तीसरे ट्यूटोरियल में हम देखेंगे शॉर्टकट Okay. डिस्टिलेशन में. नाउ सी, Okay. जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो 14 पर भी कन्वर्ज हो गया था, बट नाउ इट इज नॉट कन्वर्जिंग ऑन द 14 itself. So sometime this column is getting the data and converging from one point to another point when we are rigorously coming. But when we abruptly giving some data, then it is not converging. So mathematical equations are because this is a NACA or numerical analysis. On the back side, you see iterations because distillation columns have lots of differential equations. So उनके solution में मसला हो रहा है. Now, if I say 16 and if I say run, so 16 is okay. Again, you go back 14 और अब आप रीसेट करने के बजाय डायरेक्ट रन करेंगे तो क्योंकि अगर अगर इसमें डेटा पड़ा हुआ है नहीं, आपको दोबारा जो है वो 18 फिर 16 इस तरह पीछे आकर 16 16 पर भी नहीं हो रहा. तो जो इसमें वैल्यूज पड़ गई हैं, तो अब आप देख रहे हो कि 18 पर दोबारा नहीं हो रहा, वही सिचुएशन है. अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि आपने 18 कर रहे हैं, अगर ये फीड स्ट्रीम जो है वो अप्रोप्रिएटली इंस्टॉल हो रही है उस जगह पर हाफ ऑफ, यानी कि ये तो बाय डिफॉल्ट होता है. ये भी हम मैकेप थाइल मेथड में पढ़ते हैं मेरे साथ, और मैं इसको इसके नंबर ऑफ इनिशियल स्टेज को जो है ना वो आगे पीछे करूं, तो हो सकता है कि 14 पर भी हो जाए, लेकिन 14 का 6 पर ना हो, ये 5 पर. ओके, स्टॉप व्हेन इट गोज इन इटरेशन, यू जस्ट स्टॉप क्योंकि नहीं हुआ. 13 नहीं, सो 7. ओ What if we reset it and run, and what if we don't reset it and just run? हाँ, समटाइम ये जो डेटा है, इफ वी हैव अ डेटा, ये जितनी भी इटरेशंस हो गई, this amount of information is now faded in the background calculations. Now, if you reset, so the whole calculations vanished, and it will calculate the things from scratch. If some iterations, if you run and some iterations perform, now see, when we reset, so previous data was creating some errors, some problem, and when we reset it, then it gives us the value in a 14 number of stages. Previously it was not converged. So reset means you want to calculations from scratch, but sometimes this reset button itself create problem for us. Uh, Whatsoever you got the calculation, you now need to run from. For example, if I want to see that what is what values of energies in a number of 20 number of stages. So you if you want to reset, then whole values will be reset and the calculations run again. But because already converged case was there, so you just press run so that the appropriate changes of this particular change could be seen in the performance and other tabs. ये दो बटन जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है. Okay, actually, the game is of again. I'm saying the game is of specifications. You must understand these two tapes of distillation column. If you are not going in much detail about these two pages, one is definition or defining the specifications, and other is how to use. Sometime we could add some other, for example, column component fraction. I am also adding the
one another stream, one another specifications, which is said for the bottom, and I said that toluene, and I said it should be 98, for example. Now this is also added. You can add multiple. Degree of freedom is still zero. Degree of freedom is still zero. Why degree of freedom zero? Because the new specification is not active. Okay. Now, if you define some specifications which are not in active mode, but you gave the value, so these values are being utilized to have good estimations, but now they are not mandatory to follow. But when you click on active, so it will says that now -1 degree of freedom. Degree of freedom should be zero. Degree of freedom means number of unknowns and number of equations are equal. Over specified. Now this is over specified. हमने हमें दो स्पेसिफिकेशन चाहिए थी, हमने तीन को एक्टिव कर लिया. So we must unactive any one specification. If you are not giving the value, for example, if I press delete button in the value of this component fraction, so now this component, this specification is defined but not utilized for any purpose. Neither it is utilized for getting some estimations and nor for the active mode. But if I am giving some value and without clicking on the active, so this value could be used for getting some estimations during calculations, but now not mandatory. ये फॉलो नहीं होगा. 98% हो सकता है कि ना भी निकले, लेकिन अब क्योंकि हमने वैल्यू दे दी है, एक्टिव नहीं किया इसको. एक्टिव नहीं किया इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो ही है, लेकिन वैल्यू हमने दे दी है कोई ना कोई, तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा एनीवे. ठीक है ना? उससे ऊपर देखें, अब उसने कोशिश की 99% तक गया, पहले ये 95% आ रहा था, कोशिश की इसने 99% तक गया. हमारा उसको कहना था कि 98% तक तुम देखो इसको लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी कर दी हमने 97%, उसको उसी वैल्यू पर लाकर खड़ा किया. ठीक है? सो नहीं, लेकिन आपने एक्टिव तो किया ही नहीं इसको. एक्टिव नहीं किया. ये एक्टिव अगर करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम देगा. अगर आप इसको एक्टिव करेंगे, क्योंकि हमें इस केस के लिए 2 स्पेसिफिकेशन चाहिए. When you are giving this, you need 2 specifications. Interestingly, when you are, for example, if I say here partial condenser, if I say partial condenser, and I just giving some stream name here. Now streams are fulfilled. Now you see, again we have now we need 3 streams. We need 3 streams or 3 informations for making this column as a degree of freedom 0. Why 3 this time? Because we have some more streams are there जो कि फिर calculations में जो है ना वो problem कर रही हैं. So what is what we got कि ये नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो डिपेंड करेगा आपके कितने अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं. हम जब हमने वो वंस थ्रो या हीट एक्सचेंजर वाला जो है ना वो ऑप्शन टिक नहीं किया था, अगर हम वहां पर करते तो हो सकता है कि आपको 4-5 और स्ट्रीम्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए थी टू मेक द कॉलम जीरो. इस वाले केस के लिए आपको देखें कि इसने, अगर मैं इसको एक नई स्पेसिफिकेशन, इसने खुद इवेंट रेट को उसने खुद ही जो है ना वो एक्टिव कर लिया है. अगर मैं इसको अनएक्टिव करता हूं, अब इस दफा अब सिर्फ 2 स्ट्रीम्स एक्टिव हैं. सो इफ आई गो टू स्पेसिफिकेशन, देन यू से कि वन मोर specification is needed to for the solution because we have only 2. तो इस दफा हम अगर इसको ये वाली स्पेसिफिकेशन देंगे तो हो सकता है कि आपने स्पेसिफिकेशन तो दे दी लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा. हो सकता है कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि जो आपने स्पेसिफिकेशन दी है वो अकॉर्डिंगली सॉल्वेबल हो. माना ये अब थोड़ा आपको एक्सपीरियंस जब होगा इस ऑपरेशन के हवाले से. मिसाल तौर इस स्पेसिफिकेशन के लिए आपको वेंट रेट चाहिए, या तो वेंट रेट चाहिए या इसकी कंपोजिशन चाहिए कि कितना है, इसलिए उसने खुद ही वेंट रेट
नाम की एक स्पेसिफिकेशन दे दी थी। अगर हमने उसको टिक किया तो हो सकता है कि ये फिर भी कन्वर्जिंग हो जाए। अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू दो। अगर हम इसकी कुछ वैल्यू दे देंगे इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मोल, तो ये फिर कन्वर्ज अब हो रहा है कन्वर्ज। हमने उसको वो चीज मतलूबा चीज दे दी, बाकी चीजें भी हो रही हैं। सो दिस इज द जो इसके कन्वर्जेंस है, मेन कन्वर्जेंस ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम is the realistic problem of setting these specifications. Now, I'm going in the our मैं थोड़ा समझा दूं, उसके बाद हम भले क्लास को ऑफ भी कर सकते हैं, या हम इस तीसरे वर्जन का करेंगे जो अभी नंबर ऑफ स्टेजेस है। ये दो तो आपको समझाने के लिए हैं। ये जो पहला ट्यूटोरियल है हमारा डिस्ट 001H, दिस इज अ डिस्टिलेशन ऑफ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इथाइलिन और इथेन जो है ना वो ले रहे हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज हैं। लेकिन फिलहाल इस वाले केस में जो है ना वो इतना मसला नहीं है। सारी चीजें जो है ना वो ये बता रहा है कि आप दो कंपोनेंट लेंगे, इथेन और इथाइलिन, और आप पैंग रॉबिन्सन के साथ आएंगे और डेफिनेटली यू यूज डिस्टिलेशन ऑपरेशन। और यहाँ पर फीड स्ट्रीम और सारी स्ट्रीम्स भी आपको बता रहा है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं जब ये कॉलम पर काम करते हैं तो वर्कशीट डेटा से डेटा को एंट्री करते हैं। हमने वर्कशीट डेटा को जो है ना वो यूज नहीं किया। ठीक है ना। तो आप वर्कशीट ये जो ट्यूटोरियल है, ये कह रहा है कि आप इसके वर्कशीट टैब में जाएंगे और हर इंफॉर्मेशन दे देंगे, ताकि उधर से ही स्ट्रीम्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एनीवे ये सारा ट्यूटोरियल एक अच्छा ट्यूटोरियल है और इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस भी ऐड करवा रहा है। ठीक है ना। और फिर बाद में आपको ये कन्वर्ज करा के और परफॉर्मेंस को स्टडी करवा रहा है। और इसके मुख्तलिफ प्लाट्स जो है ना वो आपको निकाल के दिखा रहा है कि देखें कंडेंसर रिबॉयलर की ड्यूटीज कितनी हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप ये परफॉर्मेंस में ये भी देख सकते हो कि आपकी कितनी जो है ना वो कंडेंसर और रीबॉयलर की ड्यूटीज कितनी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है समटाइम, कि ड्यूटी ऑफ कंडेंसर कितनी हुई, ड्यूटी ऑफ रीबॉयलर कितनी हुई। ठीक है। सो आई आई अर्ज यू टू must solve this case. If you find any problem, then we will discuss this. ये प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा जो है ट्यूटोरियल, वो थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल इसने क्रिएट किया है। ये मैं ट्यूटोरियल एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है सॉल्व करने की नहीं। एज़ोट्रॉप डिस्टिलेशन का बेसिकली बैकग्राउंड दे रहा है। व्हाट इज एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन? When you when there is a condition when the boiling points are lying on the same value or closer value, then we can say that the situation or the mixture is azeotrope. In the form of Mckaypthyle diagram, हम जानते हैं कि Mckaypthyle diagram में जो है ना वो किसी हाई वोलेटाइल सब्सटेंस की मोलर कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट, इन वेपर स्टेट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया जाता है। नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग कि एट अप टिल आई थिंक 70-60% तक तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो डायगोनल लाइन के ऊपर नहीं आ रही। तो यहाँ तक तो सेपरेशन पॉसिबल है, लेकिन 60% के बाद अ, ये दोनों कंसंट्रेशन कंपोजिशन सेम हो रही हैं। इट मीन्स 60% तक तो हम आम डिस्टिलेशन से इसको हासिल कर सकते हैं प्योरिटी। लेकिन अगर हमें इथेनॉल की वाटर में, ये इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल है, अगर हमें इथेनॉल को 98, 97%, 99% तक साफ वो करना है, प्यूरिफाई, जो यूजुअली डिस्टिलरी प्लांट होते हैं हमारे शुगर इंडस्ट्रीज में, तो 99% से ऊपर या 99% तक जो है ना वो प्योरिटी करने के लिए वी हैव टू ब्रेक द एज़ोट्रोप, और हमें कोई ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम इस एज़ोट्रोपिक सिचुएशंस को निकलें। ठीक है ना। एज़ोट्रोप इज प्रॉब्लमेटिक फॉर डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन नहीं होती। फिर हमें बहुत सारे तरीके हैं इस एज़ोट्रोप को लीव करने के, बट one way is you can change the state variables, either pressure or temperature. You play with the pressure so that azeotrope become the situation become non-azeotropic conditions. Like इसमें क्या कह रहा है, इसमें बेसिकली इथेनॉल और वाटर ले रहा है, a feed of 24,000 kilogram
of 20 mole percent ethanol and 80 moles per water must be separated, और रिक्वायरमेंट ये है ए ग्रेड इथेनॉल तब होता है जब 99% प्योर हो इथेनॉल का, और डेफिनेटली अगर 24% 24,000 किलोग्राम पर मोल पर आवर के में 20 मोल परसेंट इथेनॉल है, तो अगर हम इसका 99% हासिल कर लेंगे तो तकरीबन उसका फ्लो रेट इस रेंज में बनेगा 7,500, तो ये मास बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वी बिगन टू क्रिएटिंग ए टेक्निकल फीजिबल डिजाइन ऑफ टू कॉलम सेपरेशन ट्रेन। यहाँ पर थोड़ा हम दो तरीकों से इसको दो कॉलम लगाकर से सेपरेट करेंगे, यानी कि टू स्टेजेस में। पहले स्टेज में हम जो नॉर्मली जहां तक ये जा सकता है वहां तक उसको सेपरेट करेंगे, नॉर्मल विदाउट एनी एजोट्रॉप। और उसके बाद हम जो है ना वो प्रेशर की गेम खेलेंगे। ऑपरेटिंग प्रेशर दूसरे कॉलम का 20 बार तक कर लेंगे, सेकंड कॉलम तक का, क्योंकि जब प्रेशर चेंज हो जाएगा तो फिर वो एजियोट्रॉप सिचुएशन या कंडीशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी, और उस हायर प्रेशर पर जो है ना वो ये काम होगा। दिस इज कार प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। उसी तरीके से दो मटेरियल ले रहा है, इथेनॉल और वाटर, और इसको जो है वो एनआरटीएल पैकेज पर सॉल्व कर रहा है। अगेन डिस्टिलेशन कॉलम लेके पहली स्ट्रीम को तो उसी तरह सॉल्व कर रहा है जैसे ये यूजुअली हम कर रहे थे अभी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस वाले सिचुएशन में अ, यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखा दूं। वहां पर कह रहा है कि डिस्टिलेशन वन में इथेनॉल को 99% रखे। सेकंड में सेकंड वी वुड लाइक टू डिस्टिलेट, यहाँ पर इथेनॉल को वो कहता है कि 90% रखे। कहता है कि आप 99% रख, यहाँ पर 99% दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपका डिस्टिलेट वन में है, और वो कह रहा है इसको 99% नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे 90%। वी वुड लाइक टू डिस्टिलेट स्ट्रीम D1 टू हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ 90 फॉर इथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एंड वो कह रहा है गो टू स्पेसिफिक फ्रॉम अंडर डिजाइन फर्स्ट वी वुड लाइक टू रिकवर 99% इथेनॉल फ्रॉम फीड स्ट्रीम। To do this, we will click Add button this draw and select ethanol as a component. Second, we would like to distillate stream D1। ये क्या है और ये क्या है? ये भी D1 है। असल में ये कह रहा है कि हमें करना तो 99% है, लेकिन उसी को चेंज करके वो कह रहा है कि 90% तक जो है ना वो करेंगे। कंपोनेंट रिकवरी हमें, अच्छा एक मिनट, ये आगे चलकर, हाँ सही है। यहाँ पर स्पेसिफिक आप थोड़ा देख सकते हैं, देखें, एक डिस्टिलेशन कंपोजिशन फ्रैक्शन और दो कंपोनेंट रिकवरी। एक फ्रैक्शन और रिकवरी। रिकवरी 99% चाहिए और कंपोनेंट फ्रैक्शन 90% तक हो सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इसको अगर करना चाहेंगे तो ये सॉल्व नहीं करेगा, फिर कुछ ये इसमें चेंजेस करके और सॉल्व करवा रहा है। और अब ये इसने कहा कि ये हमारा सॉल्व हो गया है, जो कि बहुत 90% तक इसको कर लेगा। फिर हम दूसरा कॉलम लगा रहे हैं। दूसरे कॉलम को क्योंकि 20 बार पर चलाना है, तो आप की जो D1 स्ट्रीम है वो जो है ना वो 20 बार, यानी कि इसको प्रेशराइज करने के लिए वी नीड अ पंप, तो पंप यूज करेंगे। और पंप में 20 बार के बाद दूसरा कॉलम लगाएंगे। दूसरे कॉलम में इसकी जो पंप की आउटलेट है वो दूसरे कॉलम की फीड हो जाएगी। अब इसमें 75 स्टेजेस दे रहा है, और अब ये D2 दे रहा है, और अब इसमें 99% तक आप लेकर जा रहा है आपको। और डिस्टिलेट रेट भी आपको वो बता रहा है कि कितना किलोग्राम मोल पर चाहिए। सो इवेंचुअली आप ये देख रहे हैं कि ये जो दो कॉलम है, पहले वाले कॉलम तक 90% तक हम रिमूव कर रहे हैं, यानी कि सही सेपरेशन कर रहे हैं। इसमें इथेनॉल 90% है, लेकिन इसके बाद जो है ना वो ये इसका बॉटम जो है इथेनॉल निकल रहा है, ये जो है वो आपका 99% है, और इसमें कुछ इथेनॉल रह गया है। इसको ये रिसाइकल करवा के वापस डिस्टिलेशन कॉलम में कर रहा है। और ये पहली दफा इस ट्यूटोरियल में रिसाइकल स्ट्रीम को भी यूज किया जाएगा। रिसाइकल स्ट्रीम जो है वो तब तक कन्वर्ज नहीं होती जब तक आपके जिस स्ट्रीम में ये जाए उस स्ट्रीम का और इस स्ट्रीम का जो वैल्यूज हैं वो तकरीबन एक जैसी हो जाएं, हर प्रेशर टेम्परेचर और पर्टिकुलरली
मास या मोलर फ्लो रेट। तो बहरहाल ये सारे ट्यूटोरियल है, तो इसमें वैल्यू सही सही हैं, इसलिए वो जो है ना वो आपका रिसाइकल स्ट्रीम कन्वर्ज हो जाएगा। एंड यू कैन सी दिस इज रिसाइकल। तो आई थिंक ये भी जो है वो आप इसको जो है ना वो आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इसको करूँगा तो फिर मेरे पास 15-20 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा। आप इसको ट्राई करें, ज़रूर करें, और इसमें हर वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक-एक वैल्यूज़ आप पढ़कर सही तरीके से करें। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर मास फ्रैक्शन अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि इसके मास फ्रैक्शन इतने हैं, तो आपने मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन का थोड़ा ज़हन में रखना है। कभी-कभी आप उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। कहीं कंडीशन में मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है या देखें ऊपर मोल फ्रैक्शन है, किसी ट्यूटोरियल में, ये थर्ड ट्यूटोरियल में मास फ्रैक्शन की बात करें। मैं इस वक़्त जो इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ कि अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टेजेस तो हमें पता नहीं लग रही है, तो हमें पता नहीं पड़ रही हैं। तो नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे मालूम करेंगे? तो हम फेंस्की मेथड से, फेंस्की अंडरवुड मेथड जो है, इससे हम जो है ना वो नंबर ऑफ स्टेजेस मालूम करते हैं। और ये शॉर्टकट डिस्टिलेशन एक अलग यूनिट ऑपरेशन है इन इन आवर केस, जिसको हम जो है ना वो अभी करेंगे, ठीक है? और लेट्स सी, इसमें जो है ना वो ट्यूटोरियल में कंपोनेंट इथेन और इथाइलिन दोनों सेम हमने पहले ही ले लिए हैं। अब मैं आपको जो है ना वो यहाँ पर एक शॉर्ट सी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ये डिस्टिलेशन कॉलम, शॉर्ट डिस्टिलेशन कॉलम जो है, शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम है, एक शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम। ये कॉलम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉलम समटाइम हमें अगर हमें बहुत बड़ी सिमुलेशंस बना रहे हैं तो ये डिस्टिलेशन कॉलम प्रॉब्लम करता है। तो कभी-कभी हम इस शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम को भी यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर ये शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम नंबर ऑफ स्टेजेस मालूम करने के लिए एक एक हिट एंड ट्रायल मेथड के तौर पर हम इसमें ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, ताकि हम एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ डालें। यानी कि ऑप्टिमाइज़ नंबर ऑफ स्टेजेस ये बताता है। अच्छा, ये शॉर्टकट डिस्टिलेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शॉर्टकट ही हैं नाम के हिसाब से। अब मिसाल तौर में लिखूँगा कि इसमें एक फीड स्ट्रीम है और इसमें कोई है कंड कंड, और इसमें जो है वो टी और स्ट्रीम बॉटम, और इसमें क्यू रैप रिबॉयलर। ओके, टॉप प्रोडक्ट फेज लिक्विड, यहाँ पर आपने लिक्विड ही दे दिया, ये डिस्टिलेट। अब यहाँ पर ये आपको नहीं पूछ रहा कि किस फेज में, हमने इसको बाय डिफॉल्ट लिक्विड ही है। फिर हम जो है ना वो वर्कशीट में जाएंगे, हमने फीड स्ट्रीम को डिफाइन नहीं किया। देखें, आप फीड स्ट्रीम को डिफाइन कर रहे हैं, मिसाल मैं कह रहा हूँ कि ये फीड स्ट्रीम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 2 बार पर है, जो भी आपका वैल्यूज हों, तो 200 इसका है। और इसकी जो कंपोजिशन है इस फीड स्ट्रीम की, वो बेंजीन, लेट्स से 55.55 और 0.445। तो आपने इसको कहा कि ओके, ठीक है। नाउ यू गो इन डिजाइन एंड इन पैरामीटर्स। ना यहाँ पर जो है इस शॉर्टकट डिस्टिलेशन में आपको 2 कंपोनेंट बताने पड़ते हैं, लाइट की इन बॉटम एंड हेवी की इन डिस्टिलेट। बॉटम में लाइट की क्या है, ठीक है? तो जो यूं समझ लें कि बॉटम में जो लाइट की और हेवी की क्या है, कि लाइट का मतलब होता है कि हाई वोलेटाइल सब्सटेंस, और हेवी का मतलब होता है कि लो वोलेटाइल। तो बॉटम में हाई वोलेटाइल सब्सटेंस इज बेंजीन एंड अच्छा, ये बेंजीन और उसका है, चलें। और यहाँ पर हो गया हेवी इन डिस्टिलेट। डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि बॉटम में बेंजीन बहुत ज़्यादा चली जाए, तो यहाँ पर हम इसको एक अंदाज़ा दे देंगे कि कितनी आप चाहते हो। सर मैं कहूँगा इसको 0.01 तक मुहित रखें, और इसको भी 0.01 तक, कि ये वो चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए लाइट की इन बॉटम। तो बेंजीन हमारी बॉटम में कम से कम निकले, तो 0.01 निकले तो बेहतर है। इसी तरह डिस्टिलेट में फिर टॉलिन कम से कम हो। अब आपको
प्रेशर बताने हों कंडेंसर के, मिसाल मैं कहूँ इसको 1.9 और ये 2.4 बार है, ठीक है। और रिफ्लक्स रेशो बताना पड़ेगा आपको, मिसाल मैं कहूँ कि 4.5 रिफ्लक्स। यू विल सी के ये चीज़ कन्वर्ज हो जाएगी, ये कन्वर्ज हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, परफॉर्मेंस में टेब में आप देखेंगे कि ये आपको बताएगा कि अगर आप ये सिचुएशन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेस 12 चाहिए। अभी हमने देखा भी कि 12 तक जो है ना वो ये कन्वर्ज कर भी रहा था, 12 से ऊपर। 12.12 क्या मतलब है कि 13 स्टेजेस, और ये हैं आइडियल स्टेजेस। और एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेज विथ सम एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी आपको 16 के करीब नंबर ऑफ स्टेजेस चाहिए। आइडियली आपको 12 13 चाहिए, और ये चाहिए। और ये कुछ आपको टेंटेटिव वो भी दे देगा, एनर्जीज कितनी लगेगी, कंडेंसर की एनर्जी कितनी लगेगी, रिबार कितनी लगेगी। तो ये मेथड होता है। लोग अक्सर जब हाइसिस का टेस्ट लेते हैं, कोई बंदे क्वेश्चन करते हैं, तो जो बंदे हाइसिस सीख रहे होते हैं, फिर बाद में कहीं अगर आपने टेस्ट वेट देना है, तो जो शातिर किस्म के लोग हाइसिस वाले होते हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यूज में कि कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ स्टेजेस इन हाइसिस। तो लोग क्योंकि ज़्यादातर जो सिखाने वाले भी होते हैं और सीखने वाले भी, वो इस डिस्टिलेशन कॉलम को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। तो इस डिस्टिलेशन कॉलम में तो आपको नंबर ऑफ स्टेजेस खुद डालनी पड़ रही हैं। तो इसका जवाब होता है यस, वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेजेस बाय यूजिंग शॉर्टकट डिस्टिलेशन मेथड बाय फेंस्की अंडरवुड। इसमें जो पीछे बैकग्राउंड में जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन चल रही है वो फेंस्की अंडरवुड है। ये मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन कॉलम मैकैब के बुक में जो है वो 17वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसकी एक अच्छी खासी डेलिब्रेशंस हैं। लेकिन बहरहाल हमने क्विक आपको समझा दिया है कि हम इसमें क्विकली जो भी काम करना चाह रहे हैं उसकी डिस्टिलेशन, ये चीज़ें बताने के बाद पैरामीटर में लाइट की और हेवी की को आपने अंडरस्टैंड करना होगा। लाइट की का मतलब है कि वो चीज़ जो के हाई वोलेटाइल। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक चीज बता रहा है। आप एक टेबल देखेंगे, अगर बहुत सारे कंपोनेंट हो तो क्या केसेस रहेंगे इन डिस्टिलेट में जो है ना वो ए जो लो हाई वोलेटाइल होगा। इसमें ये लिखा हुआ है इफ देयर आर कंपोनेंट ए बी सी डी डिक्रीजिंग वोलेटिलिटी। इसका मतलब है कि इस वाले एग्जांपल में ए इज मोस्ट या हाईएस्ट वोलेटाइल, ये डिस्टिलेट में ही निकलेगा ज्यादातर। बी फिर थोड़ा कम वोलेटाइल, सी कम वोलेटाइल, और डी सबसे कम वोलेटाइल। यानी कि डी आप इसको ना भी कहेंगे, ये बॉटम में ही निकलेगा। तो अगर सिर्फ दो हैं, ए और बी हैं हमारे केस में, तो एक हाई वोलेटाइल है, एक लो वोलेटाइल है। तो हाई जो लाइट की है वो ए है, जो हेवी की है वो बी है। लेकिन अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो यू मे फाइंड सम मिक्सचर्स। तो आपको ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल तौर इन केस अगर एक कंपोनेंट है तो क्या, दो कंपोनेंट है तो कैसे आप देखेंगे, और तीन कंपोनेंट है तो आप ए बी सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिस्टिलेट में। तो ए बी सी इज द लाइटेस्ट की इज सी, ठीक है ना, क्योंकि इन एबीसी में जो सबसे कम है वो सी है। और इसी तरह हेवी की तो डी रहेगी। लेकिन अगर आप दो सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो लाइट की इज बी और हेवी की सी। ए बी डिस्टिलेट में निकलेंगे, सी डी जो है ना वो निकलेंगे। तो इसका बी और इसका सी ले लिया। इसी तरह अगर आप वन केस का करेंगे जिसमें ए जो है ना वो निकलेगा और डिस्टिलेट में, और बी सी डी सारे निकलेंगे बॉटम में। तो इस वाले केस में लाइट की रहेगी ए और हेवी की रहेगी जो इसका पहला। बॉटम में जो सबसे पहली चीज है वो आपकी हैवी होगी, डिस्टिलेट में जो सबसे लास्ट वाली क्वांटिटी है वो आपकी लाइट रहेगी। ये टेबल इस तरह बनाया गया है। एनीवे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू विल ट्राई दीज थ्री ट्यूटोरियल्स। कल मैं इसके बाकी ट्यूटोरियल्स भी जो है ना वो आपको भेज दूंगा, ताकि इस हफ्ते आप ये सारा करते रहें। और इसमें कुछ मज़ेदार ट्यूटोरियल्स भी हैं जो हमें करने पड़ेंगे, और बड़ा हमें नेक्स्ट टाइम हमें मज़ा आएगा। और फिर हम सैटरडे को ये करेंगे और संडे को फिर हम जो है ना रिएक्टर्स की तरफ चले जाएंगे। आई होप today's class is good enough so that you can understand the distillation and try it yourself. If you have any question, then you can ask. या पहले ट्राई करेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे? सर आई थिंक ट्राई करके फिर क्वेश्चन पूछना ज्यादा अच्छा है। चलें, आप ये तीन तो ट्राई करिएगा कल तक, और कल मुझे याद भी कराइएगा
शाम तक अगर मैं नहीं भेजूं तो ये मुझे इसमें जो है ना टोटल सॉरी इसमें जो टोटल देखें मैंने ये 3 भेजे हैं, तो फेज रूल, एक्सट्रैक्शन, प्रेशर स्विंग, एजेट्रा, ये सारे जो हैं वो आपके हैं। आखिरी आखिरी जो है ना वो CO2 एब्जॉर्बर है, कोई बंदा बोल रहा था, तो इसका ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाला एक है। ये सारे मैं कल आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा जो है ना वो वर्जन चेंज करना होता है, मैं इसको थोड़ा सेव करके दिख देता हूँ। तो ये सारे जब आप ये सारे ट्यूटोरियल्स कर लेंगे तो फिर आपकी डिस्टिलेशन और ये सेपरेशन पर सब 3 सेपरेशन बेसिकली हैं। एक एक्सट्रैक्शन वाली सेपरेशन हमें समझनी होगी, बाकी एब्जॉर्प्शन कॉलम और डिस्टिलेशन आज हमने समझ लिया है, शॉर्टकट भी हमने कोशिश की समझ लिया है। ये 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी ये सेपरेशन है ये इन्हीं की वो हैं, लाइट क्लासेस हैं। अगर आप गौर से देखें, अगर मैं सेपरेटर देखूं तो बेसिकली एब्जॉर्बर, डिस्टिलेशन, शॉर्टकट डिस्टिलेशन, ये 3 और एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, ठीक है ना। ये आपका लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर, ये 3 ये 4 चीजें जो है ना वो सेपरेट हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्टिलेशन कॉलम से ही निकली हैं, लाइक एक है रिफ्लक्स्ड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर है लेकिन रिफ्लक्स लगा हुआ है, यानी कि वो मर्ज हो गया। फिर रिबॉइल्ड एब्जॉर्बर, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो मिक्स है। बाकी कुछ एडवांस चीज़ें हैं, इनके ट्यूटोरियल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे सॉलिड ऑपरेशंस होती हैं, बैग हाउसेज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में ये काम होते हैं, या प्रेसिपिटेटर्स हैं, या साइक्लोन सेपरेटर्स हैं। तो ये भी आपने अपने तई देख लेने हैं। अगर हमें टाइम मिला एट दी एंड तो हम इसके एक आधे ट्यूटोरियल जो है देख लेंगे। मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन का जो है ना उसमें है, ठीक है। So I hope when you go through these tutorials, I say that you could get some good information or understanding about the distillation solution. Let's hope so, sir. Okay. Thank you I have for a question. sorry. I have a question. Okay. Yes. Go on. I was doing those practical tasks. You gave us this task for version 7 or 8, an earlier version. Okay. Okay, it's just basic question, but you were trying to make us find specific volume of the mixture, and And which that specific volume I couldn't find anyway. specific volume. Okay. Yeah. Specific volume. Basically, when you say a word specific, do you know what is the meaning of by saying word specific to any quantity, like specific density, specific volume, specific heat capacity? So this word Analog specific gravity. specific gravity. So when you add this word specific to any other quantity, it means the quantity per unit mass. So specific volume means volume per mass. So it is a reverse of density actually. But if you want to find any specific volume of any stream, like this is a stream, if I want to see what is its specific volume, so you will find here a specific volume in this list, specific heat, and There's nowhere. okay, if there is nowhere, then you can add this particular kind of property from by clicking this plus sign, and then you said uh, there are specific is petroleum specific volume. किसी ना किसी प्रॉपर्टी में ये स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, या तो फिर वो सर वो वर्जन भूल गए हैं. सर आई रिमेम्बर जब हमने 3.2 किया था तो हमने ये मैनुअली कैलकुलेट किया था एक नहीं प्रॉपर्टी मैं को लेकर से बेस बाद प्रॉपर्टी। में ये मैन्युअली आपने कैलकुलेट Exactly. वाकई किया था, मैन्युअल तो कैलकुलेट किया था, लेकिन फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे किसी वर्जन में जो है ना वो कहा था कि सर ये होता है, और फिर मुझे दिखाया भी गया था।
अब शायद फिर वर्जन के आगे पीछे होने से उन्होंने जो है ना उसको निकाल दिया, लेकिन बहरहाल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। और हो सकता है कि मैं जो है ना वो कहीं से आपको ढूंढ कर ला दूं बाद में। होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो आप मैन्युअली इसको रिवर्स ऑफ डेंसिटी कर सकते हैं। आपने सारा ये एक-एक ये प्रॉपर्टी देखी है? यस सर, आज मास 6 दफा तो स्टडी एंथैल्पी, की है मैंने। मास पर किलोग्राम, वॉल्यूम पर किलोग्राम, वॉल्यूम पर किलोग्राम, There's वॉल nothing cubic meter per kilogram or whatever. Nothing. मोलर वॉल्यूम तो इज दिस फुट क्यूब मोलर वॉल्यूम है, माना मास और पर मोल के हिसाब से तो है। यस, यू आर राइट। और इस कंडीशन में भी नहीं है। Can we define it by ourselves? Yes, if you want to calculate, then you can use uh, द स्प्रेडशीट, और इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करके माना वॉल्यूम का एक्सेस करेंगे, और इसके उसको मास को और डिवाइड कर लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट को डिवाइड करेंगे तब भी आ जाएगा। डेंसिटी का इन्वर्स लेंगे तब भी आ जाएगा। Can we have user defined property or something? I haven't tried user defined property till now, इसमें है but ना user variables. user variable, but view component plus and but these kind of calculations, if some property is not available or some property is need some calculations and then you calculate, so you use a spreadsheet formula system. You actually use this way, that you must have a spreadsheet and set in the spreadsheet that said this is for example, if I want to access its density, I said density, and I said here insert some amount, this one stream, and you may find density A B C D. Maybe mass density. Mass density, mass density, yes. So its mass density is there. So I said specific volume is this 1 upon this value V1. So this is your specific value. So you can calculate by this, and now this B2 cell can be used for any other calculations as well. So usually we use this spreadsheet to estimate any variable which is not available. That's right, but it looks like it used to be somewhere in the properties table, because your whole sheet 1B, its basic task is all about specific volume. Specific in those days, a specific volume. I just wanted to uh, make some attention of how to convert the intensive properties, extensive properties to intensive by thermodynamic rule. So actually, when we say specific, means we are now, for example, volume is an extensive property. It depends on the mass, but specific volume is not now free from mass variation. तो उस जमाने में हमने ये जो है टास्क क्रिएट किया था ताकि थोड़े बहुत स्टूडेंट को ये पता हो। फिर हमने इसको मैन्युअली कैलकुलेट, ये फहद बैठा हुआ है, फहद कहता था उस जमाने में हम इसको मैन्युअल कैलकुलेट करवाते थे कि भाई डेंसिटी ढूंढो कहाँ है और उसको डिवाइड करो।
लेकिन फिर मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, और कि एक स्टूडेंट ने किसी दूसरे कोर्स में मुझे जो है ना वो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को दिखाया था प्रॉपर्टीज में। इस वक्त कहीं से मैं, हो सकता है कि ढूंढूं, कहीं मिल जाएगा मुझे, या हो सकता है कि इस वर्जन 11 में बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया हो। बहरहाल, तो फिर बाद में मैंने फिर वही स्टूडेंट को यूज करना सिखाया कि भाई ये देखें, ये आपका होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दिस वन। चलें ठीक है, ढूंढिएगा। ओके ओके, चलें। गुड लक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको आप ये शेयर भी करेंगे और आपसे सुनेंगे कि आपने क्या क्या इसमें किया। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू, बाय।